exactly. Okay, so what I have done is जस्ट मैंने एच बी सी डी जो हायर एंड बूट की डीवीडी होती है जस्ट उसको मैंने इससे अटैच किया है टू विंडो मशीन into the setting of VMware, and I have gone to, should I repeat this? I will repeat. See, there is no issue. I will restart my machine. As you all know, this is password protected, so we will try to bypass this password with that higher and boot DVD. Okay. So if you got any system or you forget the password of your system, so you can use this method to log in into your window machine. Okay, guys. So you have to restart the machine or your actual physical machine. You have to restart and you have to press F2 option, F2 key. Okay, so it'll be gone into boot manager. And meanwhile, to ensure that your higher and boot DVD is connected to this, like go to setting option to window and see whether on the CD DVD, your HB CD should be connected over here. Like or it is not there, then you can browse to that HB CD option. Okay. Press the OK key and you have to go to third option where you can see the CD-ROM. So here the mouse will not work. You have to navigate with the left and right and up and down arrow only. So as you all can see here, the third option is CD-ROM, EFI, VMware Virtual SATA CD-ROM. Okay, you have to go on this. Now we'll wait to load this window. And I will provide the link where I have downloaded this Iron Board DVD. Okay. So as you can see, the window machine is initializing with the boot DVD of Iron. Okay. So here you will see the interface of Iron boot DVD. Okay. So you have to go to, you have to close this and you have to go to this power button. You have to search for password and you will find over here anti password edit. So you have to go on this and you have to open and see here you will see the different kinds of user present into your system. So first of all, the administrator user 91970 default account and the guest user. And if the one or two more user into your system, that name also you will see over here only. Okay, so as you know, my system name is 91970. So I will click on that and I will change the password. See, and what are the new password which I want to keep of my window machine without knowing the old password. So the new password, can anyone tell me what I should keep? जस्ट मुझे बताओ क्या रखूं, फिर वो पासवर्ड से हम लोग लॉगिन करेंगे मशीन में. हेलो. कोई भी मुझे बताएगा क्या पासवर्ड रख सकते हैं? कैन एनीवन? Hello, password can be hello. Hello. Okay. So see, HELLO, hello password, and the verify in that. Press the same hello, HELLO, hello. Okay. Okay. And here you will see the change password and the save changes. And it is saved and press the exit. Okay. So what now you have to do? You have to just restart the machine. Go to restart guest machine.
Now see, this is lock screen. Earlier the password was root. So now I will press the root. So here you will see I'm not able to enter into this root. Okay. So as one of you suggested me to write the password of hello. So HELLO, hello. As you all can see, this is hello. Now we'll press the enter. So you will see the password has been reset. Okay. So like this, you can set the password of your virtual machine or your actually installed window machine also. Okay, guys. Have you understood this? How to reset this window password without knowing the actual password? Yes, sir. Okay. Yes, Any sir. any doubt in this? And what the Hiren DVD which I have used this Hiren boot DVD. Okay, so I will provide with this link to you all, so you can also be downloaded into your system. Okay. Now window machine we know that how to bypass or how to log in, and here this is Kali machine. We'll see how we can do this. So here you all can see the password of this my Kali machine is root and root. I will log in to this. See, I have login, but if I want to change this password, see somehow if I forget this, then how I can change the password? So I will restart this machine. As you all can see, my machine is restarting. Here, you have to press. Okay, so it already started. And see, now I forget the password. If I enter any kind of password, then it will show me wrong credential. Yeah, incorrect password. Okay. So I know password, but you can consider me I forget the password. So what I will do, I will reset the password. Okay, without knowing the actual password of this machine. So I'll power on, I will restart this machine and I will go to boot option. You have to go to second option. Okay. I will provide you the steps which I'm doing over here to reset the Kali password. Okay. So as you all can see, where is the steps? Break Kali password. How we can break? Okay. So these are the few steps. Okay, so as you all know, this machine is already started, but we don't have to start. We have to go to boot option. So this is my Kali machine. We'll again restart this. You have to go to second option. You have to press E. Okay. So as you all know, just go to second option, open Kali, go to second option and press E. And then you have to search line where it is starting from the Linux and ending with the white splash. Okay, so can you see that line where it is starting with the Linux and ending with the white splash? Can you see? Yes, sir. Yeah. So can you give me that Linux. number of line, which is first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth, 10th, 11th. I think it is 12th or 13th line. Okay. Yeah. See, this is starting with the Linux and which is ending with the white splash. Exactly. Yes, sir. Okay. So we'll take that line. First of all, we'll admit them.
So yeah, just go to that line and press the backspace key. Okay, delete this white splash. We'll delete. We don't need this. Okay, and delete that O option also. And after next to that R, press right. Okay, and then give a space, one space, and write in it equal to forward slash bin forward slash bash. As simple as that. Just remember this. You have to delete that O and you have to instead of over just write W option. Okay, and that quiet place delete and write this init bin bash. Okay, and here into my notes it is also there. I'll provide with this. See, so you have to write rw init bin bash. Okay, then what you have to do? Control X and it will again start. So you go to into this and control X. Press control X. So here I'll press control X and you have to press the enter option. Okay. So whatever what you will see over here that the screen will load. We'll wait for a second. So as you all know हम लोग क्या कर रहे हैं काली मशीन का पासवर्ड को कैसे ब्रेक करके एक नया पासवर्ड सेट कर सकते हैं. ओके. सो और किसी के मशीन में इंस्टॉल होगा काली मशीन तो ये स्टेप्स ट्राई करना और आपने जो भी पासवर्ड डाला है अगर से आप उसका पासवर्ड भूल गए सो वहां पे आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हो. ओके. As you all know this is loading, we'll press the enter button over here. Okay, so as you all can see, this is our command prompt. So whatever we can write over here, like see, we can to reset the root password. What the command we can use? किसी को याद है हम लोग ने कमांड क्या बताया था कि किसी भी यूजर का पासवर्ड कैसे चेंज करना है? Can anyone remember? I think on Saturday I told you all. Pass wd command. Okay, so this is pass wd command and we have to reset the root password. So just write root. Just write root and yeah, just new password. The new password which I want to enter. Can anyone tell me which password I should enter? Good morning. Okay. So good morning. I think yeah, again I will write good morning again. Good. Okay. So manipulation error. So match नहीं किया just मैं simple good password रखता हूँ. Okay. So GOOD good. GOOD good. Okay. Enter password updated successfully. Now what you have to do? Just you have to restart this Kali machine. Okay. So restart this machine. Now it is loading as usual. Okay. So again, after loading, it will be asking that username and the password, and we have reset that password. Password we have reset to good. Okay. And we have reset the root's password. Okay, even we can reset the any other user which is into that machine. Okay, so we have entered the root password or reset the root password. So you have to write the root. Okay, then you have to write the actual password. So password was good. GOOD good. See, now you can log in with that good new password without knowing the actual password. Okay, guys.
So these were the two method of password breaking of Windows machine or your Kali machine. Exactly. Have you understood, guys? Should I tell you again? So how can we change the username? Username. Username. Which username are you So talking? that root one. Okay. See, that root user is the actual user of your machine. As you all know, how many user into our system, see ls/home will go, and here you can see there is a Kali user. And tell me your name. I'll create a user with your name. Can you tell me your name? Pushkar. 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 Okay, see. So into my machine there is a user called as Pushkar. Okay. So see, I'm setting the password of the Pushkar. 1234 1234. Okay. Here I'll not यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूंगा आपका रोम नंबर फोन नंबर सब कुछ नहीं लिखूंगा but as you all know that see there is a Kali and the Pushkar. So these are the normal user of that Kali machine. And the password जो मैंने रीसेट किया वो रूट यूजर था. अभी जैसे विंडो के अंदर हमारे एक एडमिनिस्ट्रेटर यूजर होता है, गेस्ट यूजर होता है. So administrator what do? Administrator have all the privilege which is required to edit, delete and create any files into your window machine. And but the guest user, you all know, अगर से आप लोग के कॉलेज में भी वहाँ पे मशीन में you can see the guest user. You will if you will try to log in with the administrator user, you won't be able to log in. Okay, but because that the for the student there is guest user only. So now this Kali and the Pushkar, as you know, you both are just normal user only. So you will not have all the privileges. Okay, so the user root user is that root user. Okay, which is the name username. Okay, and you this Pushkar name is not standard user you can say. And how we can switch? Can anybody tell me how we can switch to Pushkar user? Do you remember SU command switch user? SEO command. Exactly. Switch user. So I will switch to Pushkar. Okay. And you have to again switch to Kali. See, I can switch to Kali, but yeah, I have not set the password. So again, I will exit to this and now I will set the password for Kali also. Kali password I will set 1234 only. Okay. Now I will switch to Kali. Okay. So here you have switched to Kali and now here you will try to switch into Pushkar. See the password it will ask the what password we will enter 1234. Okay, and see if you forget the password of Pushkar user, even though you can reset the password. See if you forget this password, uh, 1234. Now here you are the Kali user, but you want to switch into Pushkar user. Okay, so if you forget this password, so you don't have to worry. See if you forget this password, you will see that command not much and the authentication failure. Here you can see. So what you will do, just switch to root user. Okay, so you can see the root user. So root user can change the password of Pushkar user. So passwd instead of Kali, we'll write over here Pushkar. Root user can reset the new password without knowing the old password. Okay, so I will again enter over here 1122. Okay, 1122. So here the new password has been updated for the Pushkar user. Okay, guys, so these are the few simple commands which you can use this for password management. Okay, Okay, sir. yeah. Anyone else have any doubt regarding this? No? Yes. Okay, so till yet we have learned how we can break the window password without knowing the actual password and how we can break the Kali password without knowing the actual password. Okay, so these were the few simple steps.
Now we'll see that further topic of malware. Okay. So anybody know what is malware or what is virus? किसी के फोन में या फिर लैपटॉप में मालवेयर वायरस आया अभी तक? Does anybody have gone through or affected with the malware or the virus? Yes, sir. Okay. Can you elaborate how कैसे आपके फोन में या फिर लैपटॉप में आया है? We'll have practical over here. हम लोग यहाँ पे इसकी theory भी देखेंगे and we have practical also. Okay. आप अगर से मोबाइल फोन में कोई वेबसाइट विजिट कर रहे हो, ओके, सो यू माइट हैव सीन ओवर देयर अ लॉट ऑफ एड्स पॉप अप into your phone, like your phone memory is full or your RAM is full or these thousands of viruses has been detected in your phone. So press this option to clean all these viruses. I think सबने ये मैसेज अपने अपने फोन में देखा रहेगा. Exactly. Yes. Exactly. So just वो क्या रहता है, that also is one kind of malware only, which is called as adware. Okay, so we'll gone through different kinds of malware. Malware, virus and malware में difference क्या है पता है? No, sir. Okay. So virus is one kind of malware only. So malware contain many kind of different malicious software. Okay. So malware word came from, we'll see. We'll see, as you can see, malware is word came from malicious software. So first three word mal and the software last four word ware. So called as malware. Exactly. And malicious means intended to be harm and software which we tools which we download into our system. So that altogether is called as malware and means malicious software. Okay. So here there is mainly different kinds of malware. So first is virus. So virus is one kind of malware. So वायरस बहुत तरीके के होते हैं. if we talk about मेडिसिन एंड ऑल, सो वहां पे भी वायरस नाम सुना रहेगा. किसी को वायरस हो गया है, फाइल गया है in between before just 1 to 2 year, coronavirus was a bit famous in among all the on the world. Okay. सो दैट वाज द वायरस जो हमें नुकसान पहुंचाता था फिजिकली, हमारे इम्यून सिस्टम को डाउन करके या फिर हमारे किसी भी बॉडी पार्ट को डैमेज करके, इस तरह से. ओके, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्यूटर वायरस. ये क्या करेगा, ये भी सेम काम करेगा, बट जैसे वो बॉडी को हार्मफुल, दैट वाज हार्मफुल फॉर द बॉडी, इट इज हार्मफुल फॉर आवर सिस्टम. And if the virus came into our mobile phone, it could be harmful for our system also, or mobile phone also. Okay. So virus क्या क्या करेगा, just if it came into our system, so can anyone elaborate what virus could do? Just one or two line, it's enough. It will corrupt the files. Exactly, that will corrupt the file. Different, if there is a different kinds of file, it will corrupt, and you will not open to that. You will not able to open that file. Okay, or you will see that data has been changed or it is vanished. Okay, can anyone else? Any other effect of virus? Make your system down, make your system slow. All these are the consequences of virus if it is came into your system. Okay. And if we talk about worm is also one kind of malware only, the second type which we can say. So worm multiply itself. Okay. So अगर से in case मेरे लैपटॉप मेरे सिस्टम में worm आ गया, so जैसे एक worm आया, so along with the time it will multiply itself. Okay. जैसे अभी 5 है, फिर 10, 15, 20, 25 ऐसे मल्टीप्लाई होके क्या करेगा,
it will fill the full RAM or use the fully storage. So mean what will the effect that my system will start hanging off, or it will slow down, and eventually it can happen to crash that R window machine also. Okay, so ये just machine में multiply होगा and system को slow down करेगा, and even it can crash the system also. Clear है virus and worms? Yes, sir. Okay, and यहाँ पे third है trojan. Okay, नाम सुना पहले trojan का भी? Can anyone listen that trojan earlier before this? So what will Yes. Trojan do? Okay, so as you know, what will Trojan do? Trojan do? Trojan will that one kind of kidnap your system. Okay, so it can do everything behalf of your system. Okay, it can take remote access of your system, or it can execute any command into your system. Okay, so if the Trojan is came into your system will work as a bot. Okay, whatever instruction that attacker will do, your system will do like that, or your system could be kidnapped by that attacker. Okay, I think it is much clear with with that diagram. Okay, and the fourth kind of malware is ransomware. So, can anyone explain how the ransomware will work, and what is ransomware? It will ask for money. Exactly. Along, I think it is much clear with the diagram, which will ask for the money. So, so why we should pay the money? See, if you have very important data into your system or any server which have high confidential data into that server, so attackers what will do? They will do the ransomware attack and on that machine, which will encrypt all the data which is being present into that server. Okay, so whatever the actual data was, that has been encrypted. So even though they will try to access that data, they will not able to access, which was very important for them. Okay, so now they will attackers will contact to that victim, and what they will ask for the money, and they will say that you that give me that money, then only will give you original data or will decrypt your data. Okay. And that transaction is done by Bitcoin or uh, any that cryptocurrency, which is not traceable. Okay. Which is very tough to trace. So that's why that transaction is done between that Bitcoin and the cryptocurrency and all. So they will ask for money, and if they ask for any amount, if you don't able to pay, they will just destroy that data, which could be very hectic for you. Okay. So I think ransomware is clear to you all. Clear? Yes, sir. Yes, Okay. sir. And the fifth, I think it is much clear than which I already told you, adware. अपने सिस्टम में यूज करते करते अगर से आपको मल्टीपल एड्स पॉपअप कर सकते हैं कंपनी के एंड ऑल, and that ad, if you are deleting that ad again, you can able to see that ad again and again into your system even after closing that ad. It means that adware malicious software has been entered into your system, and what you can do, you have to just remove that from the that file actually where it is present. Okay, so there is a lot of sites which where we can scan all the folders. I will tell you further in this lecture how you can scan that folder and all, or if there is any link, how you can scan that link, whether that is malicious or not. Okay, so adware, if that comes into your system, so you will get different kinds of pop-up. It could be different kinds of pop-up of company, and it could be pop-up of any other porn websites also. It could be pop-up of different kinds of advertisement. Okay, so this is adware. And on spyware, if spyware malware came into your system, then you will be on the monitor mode for 24 by 7. Anyone can watch you anytime. Okay, like जासूस कैसे एक दूसरे पे नजर रखते हैं, जो भी विक्टिम होता है जिसको उन लोग को टारगेट मिला होता है, उस पर 24/7 सारी उसकी एक्टिविटी क्या करता है वो, वेयर इट गो, वेयर हाउ ई ईट,
वो चिट चैट किसके साथ करता है, किसके साथ उसका सेटिंग है, ओके, उसका एड्रेस एक्चुअली क्या है, तो वो सारी चीज मॉनिटर करता है वो स्पाई। सो दैट्स लाइक स्पाईवेयर आल्सो एवरी टाइम इट विल मॉनिटर जो आपके सिस्टम का बंद होने का चालू होने का टाइमिंग क्या है, व्हाट आर द वेबसाइट विच यू आर विजिटिंग, and even though if you are visiting, what are the actual thing you are doing into that website. Okay, and if you are accessing the Facebook, Instagram, that how many hours you are accessing that, and what's the password of you are entering into that. Okay, whom you are searching on Instagram, Facebook, everything it will be monitored by spyware adware. So this is very dangerous spyware because you are your privacy is totally into a dangerous. You are not totally private privacy into privacy mode. Okay, so this spyware could be very dangerous. And as you can see, this is rootkits. ओके, सो रूट किट्स में क्या होगा, जो वायरस होगा या फिर जो मेलिशियस सॉफ्टवेयर होगा, वो सिस्टम के एकदम रूट में जाके फिक्स हो जाएगा। ओके, सो रूट में फिक्स होने से क्या होता है कि सिस्टम अगर से आप बंद चालू भी करते हो तो भी वो वहां पे रहेगा ही रहेगा। ओके, सो सबसे डेंजरस आप बोल सकते हैं रूट किट्स है। वहां से अगर से आपको रिमूव करना है तो आपको हो सकता है कि हार्डवेयर के कंपोनेंट कुछ रिमूव करने पड़े। Okay, then only it can you will be you able to remove that rootkit malware. ओके, तो दिस इज वेरी डेंजरस। एंड ये सब कैसे, जितने भी तरीके के वायरसेस हम लोग ने बात किया है या फिर ये फाइललेस मालवेयर बात करते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि ये सारे मालवेयर आपके सिस्टम में कैसे आ सकते हैं। सो रूट किट्स द मालवेयर विच अगर से आपके रूट्स के अंदर आ जाता है किसी into any kind of component of your system, it arrives, so it can create that component अनयूजफुल। ओके, सो आपको वो सिस्टम कंपोनेंट या तो रिमूव करना पड़े या तो आपको उसको फिक्स कराना पड़ेगा। ओके, एंड फाइललेस मार्वल क्या होगा, मालवेयर क्या होगा, यहाँ पे इन दिस देयर विल बी अ स्क्रिप्ट जो रैम में जाके डायरेक्टली लोड हो जाएगा। ओके, एंड आपकी मशीन को वहां पे थोड़ा स्लोली स्लोली दैट विल मेक योर सिस्टम स्लोली। एंड देन बट द वन गुड थिंग इज अगर से आप this fileless malware is not active when your system is off, because fileless it is not any kind of software, it is just a piece of code, or you can say it is one kind of script which load into your RAM. So your RAM is running until your system is running. Okay, so as soon as you off your system, this fileless malware is also will gone through your system, because until your system is on, the every data will be into your RAM. So when you're putting your system down or switch offing your system, the data will deleted into your RAM. So that's why if you if your fileless malware came into your RAM or into your system, just you have to restart the machine. So even though if you are not feeling that any kind of malware virus came into your system, usually you have to restart the machine. Or if you're facing any kind of like system is lagging or any kind of other suspicious activity in your system, just try to ready with the restart machine. Okay, so ये सारे malware के जो type हम लोग ने we have discussed over here. Can anyone tell me how this all malware can arrive into your system? कोई बता सकता है ये सारे malware कैसे आ सकते हैं सिस्टम के अंदर? Clicking on suspicious links. Phishing link? Any suspicious links, any एग्जैक्टली, सस्पिशियस लिंक तो आप उसको एज अ मेल बोल सकते हो, वाया मेल आ सकते हैं ये। मान लो आपको सम someone has send you any kind of mail and there is any kind of link, so you can if you are pressing that link and if it is containing any kind of malware, then that any malware can get into your system and system can be down. Okay, सबसे फर्स्ट स्टेप कि वो मेल के थ्रू आ सकता है या फिर कोई सॉफ्टवेयर के पीछे बाइंड होके भी आ सकता है। फॉर इंस्टॉलिंग एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर लाइक विच इज पेड टूल्स जो होता है, अगर से आप उसका फ्री वर्जन डाउनलोड करते हो टोरेंट या फिर एनी अदर साइट से, इट कुड बी केम फ्रॉम योर behind any kind of legitimate software also.
Okay, so you have to make sure that if you are downloading any kind of software, the website where you are downloading, it should be legitimate. Okay, and आप लोग ने मॉडिपीके का नाम सुना है? मॉडिपीके. If we talk about Android phone, It's yeah. So can Yes, anyone yes. tell me what is mODPK? Modified version of the official APK. Exactly. So in that mODPK, you'll be getting different kinds of features which you are not getting into your usual or your simple APK file, which you are downloading from Play Store. But that mod in now the days, कोई आपको कोई भी चीज फ्री में तो देगा नहीं. वो आपके फोन से वहां पे अगर से आप इफ यू आर यूजिंग दैट मॉड एपीके, सम डेटा दे विल एक्सेस फ्रॉम योर फोन एंड दे विल सेल दैट डेटा ऑन द डार्क वेब. ओके, इट इज एज सिंपल एज दैट, गिव एंड टेक. अगर से आपको फ्री में कुछ दे रहे तो आपके फोन से कुछ ना कुछ लेंगे. ओके, बिकॉज नाउ डेज सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है दुनिया में? जस्ट इवन नॉट द मनी. सबसे इम्पोर्टेंट चीज नाउ डेज डेटा होता है. ओके, इफ यू हैव डेटा देन यू आर, आप बहुत अमीर हो. Am I right or wrong? right. Yes, sir. Right, sir. Ex Exactly. तो डेटा सबसे इम्पोर्टेंट बोल सकते हो आज के टाइम पे. सो इफ यू हैव डेटा देन यू आर वेरी मच रिच. ओके, so you make sure that if you are using Android phone, so you don't have to download any kind of mod APK from Chrome, Mozilla Firefox and all. You have to just stick with the your apps applications which you are downloading from Play Store, or if you have iPhone then you can download from Apple Store only. Okay, just restrict yourself into that applications if you are feeling that your privacy is very important. Okay, otherwise your call details and all everything can be stolen, or and it will be there on any website or on dark web also. Okay, so always try to download that applications from valid websites or Play Store only. और इट कैन, अगर से ये आपको पेन ड्राइव में भी आ सकता है. अगर से आपके किसी फ्रेंड ने गिव पेन ड्राइव टू यू एंड वहां पे कोई फाइल है, फोल्डर है, और जस्ट उसने आपको बताया कि फोल्डर में कुछ इंपॉर्टेंट है, आप कॉपी कर लो. आपने कॉपी कर लिया, आपका डिफेंडर इज वार्निंग टू यू इवन दो यू ऑफ दैट डिफेंडर, एंड आपने कॉपी कर लिया. सो वहां पे ये सारे मालवेयर्स आपके सिस्टम में आ सकते हैं, पेन ड्राइव से आ सकते हैं. ओके, या फिर आपको बार बार कोई लिंक पॉपअप हो रही है How we कि remove the how to remove these things, huh? hello rootkits from the system? Okay. So see, the rootkits arrives into your system, then you have to find, first of all, find where the rootkits arrive. या फिर अगर से आपको वायरस आया, malware आपके system, first of all, you have to verify that which kind of malware has entered into your system. According to that, you can take the precaution for that, and you can take the further steps to remove that particular thing. Okay, so for that you have to look further. I will give you one few tricks and tips how you can remove this, and how we'll come to know that if that folder or link is malicious or not. Okay, so just be there. We'll do the practical part also. Okay, so here are the some warning sign of the malware, कि अगर से malware आपके सिस्टम में entered हुआ, so उसके consequences क्या होंगे. So guys, unmute कर लो because there is a lot of noise. Okay, so others will not disturb. Okay, thank you. So यहाँ पे there are sign कि अगर से if malware has entered into your system, so how your system will show up. So see here the freezing, your system will start freezing, crashing. Okay, so यहाँ पे आपका सिस्टम क्रैश होना ट्राई करेगा, एंड
और कोई भी प्रोग्राम रहेगा वो आपका अगर से ओपन चालू अगेन एंड अगेन हो रहा है तो दिस कुड बी साइन ऑफ मालवेयर हैज बीन एंटर्ड इनटू योर सिस्टम एंड योर डिवाइस हैज अ लिटिल, अगर से स्टोरेज पूरा भरते जा रहा है, स्टोरेज इज getting exhausted, that means malware could be there. Okay, and if you are downloaded a lot of thing and automatically a lot of file has been downloaded into your systems, and this also could be a sign for a malware. And आपके कंसेंट से अगर से आपको किसी को कॉल जा रहा है, मेल जा रहा है या फिर कुछ और जा रहा है, कॉल की तो डिफरेंट थिंग है, वो कॉल स्पूफिंग हो सकता है, बट अगर से कुछ मेल जा रहा है या फिर कुछ फाइल ऑटोमेटिकली डिलीट हो रही है, ऑटोमेटिकली क्रिएट हो रही है, आपका सिस्टम स्लोली स्लोली रन कर रहा है, एकदम हैंग कर रहा है, सो दिस कुड बी साइन कि वहां पे मालवेयर आ चुका है। ओके, तो किसी के सिस्टम में ऐसा आपने किसी ने फेस किया है? एनीवन? Yes, sir. In my system, the apps are automatic are open. एग्जैक्टली। सो अगर से उस सिस्टम में बंद चालू भी हो रही कोई फोल्डर या फिर एप्लीकेशन, और इफ यू आर नॉट एबल टू क्लोज दैट एनी पर्टिकुलर एप्लीकेशन इवन दो, हेलो, Yes, sir. okay, so these are the just symptoms. What are the prevention that we can take from this malware? So first, the very big steps that we can take, we can have a good antivirus or anti-spyware softwares. Okay, so if we buy any laptop, so along with that we get that antivirus also. So can anyone tell me the big company of antivirus like Norton, McAfee and all? There is a lot of company which provide antivirus or anti-spyware. Okay, so you can use any antivirus or spyware to keep yourself safe from different kinds of malware that we have learned. And the second best step is use secure authentication method. Authentication method means you can have a better password to for your system, or if you are or if any folder is very important for you, you can have a better password for that. And for your social media accounts, if you have done login into your Facebook, Instagram, into your system only, so you can have a good password and update yourself with the password. Like, see, you have to change the password of your social media accounts in every 25 to 30 days. I think in a month you have to change. Okay, I think I told you earlier also. It's very important to change because sometimes लोगों को पासवर्ड गेस हो जाते हैं। लोगों को मीन्स अटैकर्स जो भी होते हैं, आपके डेली रूटीन को देख के, आपके बिहेवियर को देख के, या फिर आपके जस्ट प्रेजेंटेशन, या फिर आपको देख के जस्ट इवन ही कैन गेस द पासवर्ड एंड ही कैन क्रिएट इट्स ओन पासवर्ड लिस्ट and he can attack on your social media account and eventually will say that your system your account has been hijacked. Okay, so it's better to update your password in a month. Okay, and keep your software update also. So what is a difference between update and upgrade? Can anyone tell me? Anyone? जो मेन सॉफ्टवेयर है उसका। Exactly. अगर से आपके फोन के अंदर आप अगर से आप प्ले स्टोर पे जाते हो, व्हाट्सएप आपके फोन में डाउनलोडेड है, फिर भी वहां पे आपको अनइंस्टॉल के जस्ट राइट साइड में आपको अपडेट का ऑप्शन शो करेगा। हर हर महीने, एक दो महीने बाद शो करेगा ही करेगा। क्यों करता है शो, बता सकते हो कोई? अपडेट का ऑप्शन। टू ऐड सर हाँ, न्यू फीचर्स आ जाते हैं अपडेट से, एग्जैक्टली बग्स क्लियर होते हैं। एग्जैक्टली। If there is any kind of bugs and vulnerability into that particular software, then company patch that software and release the updated version on that official website. Okay, and if the company want to add any other feature which is additional feature, so he फीचर्स भी update। क्लियर होते हैं सर। एग्जैक्टली, बग्स भी क्लियर होते हैं और उसके अंदर नए नए फीचर्स भी ऐड होते हैं। सो सभी सॉफ्टवेयर के अपडेट आते हैं, मीन्स पैच आते हैं।
ओके, सो यहाँ पे सुना रहेगा कि ये सॉफ्टवेयर का पैच आया है, कि अपडेट आया है। सो वन एंड द सेम थिंग। ओके, मीन्स यू आर अपडेटिंग दैट सॉफ्टवेयर to have a better UI format, you can say, or better your privacy. आप अपनी privacy के लिए भी update करते हो, so always be ready to update your all the applications. So आप अपने phone में भी session होने के बाद जितने भी software है जो आप regular use करते हो, just go one by one them and update all the software like Instagram, Facebook, WhatsApp and all. Everything you have to update, or of your machine or system also, like anything if you are using, you have to update that on regular basis. And require multi-factor authentication. What do you mean by multi-factor authentication? Means if आप अगर से Instagram से username and password से login रखे हो, so instead of that you can have a login with the Google Authenticator and different kinds of like OTP. Also OTP login also you can keep, and instead of that, and there is वहाँ पे आपको कुछ hashes के भी options आते हैं कि आप एवरी टाइम वो भी यूज कर सकते हो लॉगिन के टाइम पे। एंड इफ यू फॉरगेट योर पासवर्ड और यूजर नेम एंड आपका अकाउंट, तो अब हो सकता है कि आप वहां पे खुद हो उस केस के अंदर, बट यू हैव दैट हैशेस और रैंडम की दैट अगर से इंस्टाग्राम has been sent to you, you can use that key to authenticate into that particular social media account. ओके, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू यूज मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, क्योंकि पासवर्ड वहां पे गेस हो सकते हैं, बट द ओटीपी आप ही को जिसके पास नंबर होगा, वैलिड यूजर होगा, सिर्फ उसी के पास ही मिलेगा। ओके, एंड वन टाइम पासवर्ड और यू गूगल ऑथेंटिकेशन पासवर्ड जो वैलिड यूजर होगा जस्ट उसी के पास ही होगा। ओके, सो इन दैट केस यू आर कीपिंग योर सेल्फ इन सेफ जोन फ्रॉम अटैकर्स। So pick these points and keep yourself safe. Monitor for suspicious activity. अगर से आपके फोन के या फिर सिस्टम के अंदर any kind of suspicious activity, if you can see any kind of filewell.exe, any exe file, if you can see, then you can just scan that file with the different tools which for window and all, and you can remove that files from your system and you can have a better system. And limit your application privileges, like there is a lot of applications in our we are using into our phone, फोन के अंदर सिस्टम के अंदर रेगुलर बेसिस पे हम यूज करते हैं, बट हम बहुत ज्यादा जितना ज्यादा यूज करेंगे हो सकता है चांसेस मींस वी आर ओपन फॉर एनी काइंड ऑफ मालवेयर। ओके, सो जितना ज्यादा मैं यूज करूंगा उतना ज्यादा मैं चांसेस हो सकते हैं कि अटैकर कैन अटैक ऑन मी। ओके, along with the malware different kinds of, सो लिमिट जितना मुझे जरूरत है मैं लिमिट में यूज करूंगा, और एनीथिंग मुझे अगर से यूज करना है कुछ वेरी काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट, तो मैं VMware के अंदर विंडो मशीन क्रिएट करके वहां पे यूज करूंगा। ओके, बिकॉज अगर से वायरस आता भी है तो मेरी विंडो मशीन इंस्टेड ऑफ इन्फेक्टिंग माय बेस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मेरी विंडो मशीन है उसकी जगह पे कौन सी मशीन मेरी इन्फेक्ट होगी, जो मेरे VMware के अंदर है। ओके, सो जस्ट मैं डिलीट कर दूंगा और वापस से नई मशीन इंस्टॉल कर लूंगा। सो मेरी जो बेस ऑपरेटिंग मशीन है जो कि मेरी प्राइमरी थी उसको कुछ नहीं होगा। Implementation secure email security and spam protection. So email security, spam protection is also important to have, because any kind of malicious link can came from email on mail also. Okay, so it's very important to protect yourself with the email security and spam protection. And if you're using your system, your firewall should be on every time. Like अगर से आप किसी के पेन ड्राइव से कुछ डेटा कॉपी कर रहे हो और वहां पे कोई मालवेयर है, एडवेयर हो सकता है, फाइललेस मालवेयर हो सकता है, तो आपको फायरवॉल पॉपअप देगा, डिफेंडर ऑन रहेगा तो। ओके, सो आपको पता चल सकता है कि दिस फाइल यू डोंट हैव टू कॉपी बिकॉज इट कुड बी मैलिशियस। सो इनटू दैट केस यू कैन बी इनटू सेफ जोन। बट अगर से आपका फायरवॉल ऑफ है, सो उस केस में मैलिशियस लिंक भी आपके सिस्टम में कॉपी हो जाएगा। एंड इफ समहाउ और बाय मिस्टेकली यू क्लिक ऑन दैट, दैट मीन वहां पे आपका सिस्टम का साथ जो भी है फायर मालवेयर आपके सिस्टम में एक्टिव हो जाएगा, और वहां पे आप आपका सिस्टम डाउन होके क्रैश भी हो सकता है। ओके, सो कीप योर फायरवॉल एज अ हमेशा ऑन रखो और उसकी कॉन्फ़िगरेशन हमेशा अप टू डेट रखो। एंड एजुकेट योरसेल्फ विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ लेटेस्ट
टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट malware कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मार्केट में क्या आए हैं और उससे आपको बचना कैसे, व्हाट आर द प्रिवेंशन विच यू कैन टेक फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ malware. ओके, can anyone know what is the which one the first virus was first virus? दुनिया का पहला वायरस क्रीपर था जो आरपानेट के अंदर was entered. ओके, creeper. Any doubt anyone in the prevention or type of malware? No, sir. Okay. Now we'll see the further steps which we can take. So see, malware can be also to your system or into your browser. Okay, so I will tell you about few keyloggers like see into my system here. See, if I do login into my Instagram, see Instagram, if I will do login, see this is my Instagram. If I will try to login, can anyone username would like to give? Just give me fake username also, that would be also fine. कोई बताना चाहेगा फेक यूजरनेम या फिर कुछ और? तो चलो ये एग्जाम्पल को लेते, पैरेट 123, इसका पासवर्ड मैं रखता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ओके, जस्ट मैं ये पासवर्ड रखा, लॉगिन किया. ओके, सो ये मेरा कोई अकाउंट तो ऐसा तो है नहीं सिस्टम के अंदर, बट अगर से आप मेरे सिस्टम पे आके बैठ के अपना एक्चुअल यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन भी करते हो ना, सो मैं वो वहां पे बाद में देख सकता हूँ, बिकॉज मेरे पास कुछ की लॉगर्स है मेरे सिस्टम के अंदर. देखो इंस्टाग्राम पे मैंने आपने जो लॉगिन बताया ना, पैरेट 321 और उसके पासवर्ड. ओके, see if I will do login on Facebook and if I will put over here 1 2, yes, this is, if this is my username Akash and Akash 4321 and the password double zero double nine double eight double seven double six. Okay, if I will do the login, so even that you can see into my passwords. See, if I will reload this, you can see these passwords. See, this is 00 double nine double eight double seven double six and this is my username. Okay, clear guys? What is this? This is FIA keylogger. Am I audible to you all? Yes, sir. Yes, sir. So, Yes, so sir. guys, be responsive if I'm asking any kind of question, just be yes, say yes or no, because we'll have that session interacting. So that would be more clear to you all. So I will tell you how you can download this keylogger into your system. Okay. So आप अपने सिस्टम में ये कीलॉगर्स डाल के रखो और आप अपने फ्रेंड को दे दो यूज करने, फेसबुक और इंस्टाग्राम, एंड एंजॉय विद दैट अकाउंट विथ योर फ्रेंड्स अकाउंट. ओके, तो यहाँ पे आपको फिया कीलॉगर जस्ट डाउनलोड को जाना है. यहाँ पे आप डाउनलोड स्टार्ट करोगे और यहाँ से आप उसकी सीधा जिप फाइल डाउनलोड कर सकते हो. ओके, so as soon as you download that zip file, it would be like this. See, as you can see over here, this would be the zip file. You have to just extract this. Yeah, when you will extract this, you'll be getting like this file like this. So you have to just, you don't have to open it. You have to just go to Chrome browser and this extension section and manage extension. You have to go and here you have to on this developer mode
and then you have to load unplugged, and here you have to choose that folder which you have extracted from that via zip file. Okay, so from where it is, and this is into security, malware and trojans. See, this is a folder. You have to select that folder and you have to just press over here, select folder. Okay, so it will be automatically get loaded into your this FIA keylogger in here. Also, you can remove this FIA keylogger over here, or you can disable to it. Okay, clear है FIA keylogger. Yes, sir. Yes, तो ये sir. Yes. आपके सिस्टम में जस्ट ब्राउजर में काम करेगा. ओके, और एक और है आपको बताऊंगा. एवरी टाइम आपको अगर से उसके लॉगिन देखनी है, अगर से, तो एवरी टाइम आपको सिस्टम में देखना पड़ेगा. बट इन केस देर इज ऑल्सो वन की लॉगर कॉल्ड एज स्टैकर. So this is online keylogger. So this is one kind of extension. See, already I have added into my Chrome extension. So what you have to do, just you have to go add into your extension. See, I have added over here, and as you can see, there is Stacker Online, which it will be loading. See, यहाँ पे मैं गूगल पे डाके क्या क्या सर्च किया हूँ, everything I'll come to know. Okay. सी, फेसबुक पे जाके मैंने ये यूजर नेम डाला था और कुछ पासवर्ड डाला था फेसबुक का. इंस्टाग्राम पे जाके ये यूजर नेम डाला था, ये पासवर्ड डाला था. एग्जैक्टली याद है क्या? Yes, sir. और मैं ये सारी चीजें Yes, sir. गूगल पे सर्च किया हूँ ऑलरेडी. अभी चाहिए कुछ और करके देखते हैं, देखते होता है क्या. फेसबुक पे कोई अपना जस्ट यूजर नेम बताओ. बताना चाहेगा कोई? ठीक है, पुष्कर का डाल देते हैं. पुष्कर जस्ट 1 2 3 डाल देते. एंड पासवर्ड 1112234455. Okay, you have to go to login option, and just go to Tacker, and here you will see that यहाँ पे आपको पुष्कर का यूजर नेम एंड द पासवर्ड मिल गया. बट एक्चुअली है नहीं कि आप पुष्कर को ये इस अकाउंट पे रिक्वेस्ट भेजने लगोगे. जस्ट मैंने रैंडमली यूज किया. ओके, तो ये आप अपने मोबाइल फोन से भी एक्सेस कर सकते हो. आपको यहाँ पे क्या करना होता है, जस्ट आपको इसमें लॉगिन करना होता है. जैसे मैं अभी यहाँ पे लॉगिन हूँ एक अपने फ्रेंड के अकाउंट से, दुर्गेश के अकाउंट से जिसमें लॉगिन हूँ, उसके नाम से अकाउंट बनाया और जस्ट मैं लॉगिन हूँ. और जस्ट मैं इसके बाद अपने फोन के अंदर टैकर पे जाऊंगा और वहां पे सेम अकाउंट से लॉगिन करूंगा. सो दीज आर द लॉग्स विच आई विल एबल टू सी थ्रू माय फोन ऑल्सो. ओके, और मेरे सिस्टम अगर से मैंने आपको किसी में से, आप में से किसी को मैंने अपना लैपटॉप दे दिया और वो फेसबुक चला रहा है मेरे सिस्टम के अंदर, लैपटॉप चला रहा है, इंस्टाग्राम चला रहा है, कुछ भी चलाएगा, तो वो सारी चीजें मैं अपने घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल फोन के अंदर लॉक्स में देख सकता हूँ. सो दिस कुड बी वेरी डेंजरस इफ यू आर यूजिंग योर सोशल मीडिया अकाउंट आपके फ्रेंड्स के फोन में या फिर लैपटॉप के अंदर, या फिर आप इवन कि आप साइबर कैफे में भी जाके यूज करते हो ना, तो सी इफ देयर इज malicious software into, या फिर malicious keylogger into that browser and all, so you all know how dangerous it could be. इवन कि आप जो ओटीपी एंटर करोगे वो सब भी आ सकता है. इवन कि आप जो पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, एवरीथिंग व्हिच यू विल डू इनटू दैट ब्राउजर, एवरीथिंग विल बी कैप्चर्ड बाय दैट कीलॉगर ओनली. ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके, सो कौन सा अच्छा लगा ज्यादा, फिया कीलॉगर या फिर टैकर? Yes, sir. टैकर ठीक है, जो मोबाइल फोन से भी एक्सेस कर सकते हैं. बट द पर्पस ऑफ सेइंग दिस दैट यू कैन एजुकेट योरसेल्फ कि आपको कहीं और पे यू डोंट हैव टू यूज योर सोशल मीडिया अकाउंट इनटू योर फ्रेंड्स लैपटॉप और इनटू योर साइबर कैफे. ओके, Yes, sir. because there Yes. could be keyloggers, and
and how we can detect if there is any kind of virus into our systems and all. So with the help of CMD command, with the help of CMD, we'll come to know and we can detect that. So we'll see how we can detect. So run CMD as administrator. So as we will go over here, I think it is on recording mode only, no? Yeah, it is on recording mode only. Yeah. So you can use this website. I will give this link of this website. Okay. Open your command prompt or your CMD and just run as administrator and go to root menu. Just go to /cd/. Okay. And what you have to put over here, you have to just, there is a one command @-r-a, you have to just write @-r-a-s-h and star, you have to press dot over here. Okay, so it will be able to see all the hidden files over here. And there is also one thing, like, see, if I will not to go to that /cmd, I will open just and I will use this command into this CMD only, like this. The command, yeah, run as administrator I have to do. Just press CMD. Just not every time you have to run that CMD as a run as administrator. Okay, yeah, so like this, you can see every folder into your system or different kinds of file into your system, and you can go on through every file and you can see that any suspicious file, then you can just remove that file from here. Okay, so this could be one way, like how you can remove or detect any kind of viruses through CMD. Okay. And anybody know how to hide any file or folder? How I can hide over here? There is a folder I will create 123 नाम से. So how can hide this? बता सकते हो कोई कि मैं इसको hide कैसे कर वेव सकता में हूँ? जाके सर किसमें? सर वेव में ऑप्शन रहता है, वेव View. ऊपर है ना। Exactly. और यहाँ पे गया और यहाँ पे इसको हिडन कर दिया. Exactly. तो हाइड हो गया. बट अभी ये हाइड हो गया, बट मेरे को क्या पता है कि अगर से आप मेरे सिस्टम में मैंने हाइड करके रखा है, बट आपको क्या पता है कि यहाँ पे कुछ हाइड भी हो सकता है. सो व्हाट यू डू, आप मेरे सिस्टम पे आओगे, जस्ट यू विल गो टू व्यू ऑप्शन एंड यू विल see hidden items. You will check out this and you can see that hidden item is there somewhere into this folder only. Okay, so क्या एक्चुअली में हिडन है क्या ये अगर से कोई उसको देख पा रहा है हिडन आइटम्स पे क्लिक करके, एक्चुअली में हिडन है क्या ये फिर? No, sir. नो नो. सो देयर कुड बी अदर बेटर वे कि यहाँ पे आपको हिडन आइटम्स पे क्लिक करके भी ना देख पाए. आपको पता है कि हिडन आइटम होगा तो जस्ट आप यहाँ पे आके यू कैन टिक ओवर हियर एंड यू कैन सी द ऑल द हिडन फाइल्स एंड फोल्डर्स. ओके, सो अगर से आपके फ्रेंड ने या फिर सम अनोनिमस पर्सन आपके सिस्टम से कोई फोल्डर डाल के हिडन करता है. ओके, सो बट अगर से ये मेथड से क्या किया हिडन, so we'll come to know that if there is any kind of suspicious folder and files, and there is other way also कि अगर से वो मेथड का यूज करता है, सो आपका ये मेथड वहां पे काम नहीं करेगा. जैसे कि आप हिडन आइटम से क्लिक भी करोगे तो वो काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क. ओके, so if I will unhide this, I will unselect this. Okay, so now it is no more hidden. Okay, now we will hide this file with the help of CMD. Okay, so I will give you, see here there is a command @rip sh and then file name.
Okay, so just open CMD, run as administrator, or instead of opening here CMD, where you have to open here only. See, you have to hide this 123 folder. Okay, so how you can hide? Just click over here. Just write CMD over here. So you have open CMD into that folder. So what you have to do? You have to use that command attrib -s-h, and what you have to write? You have to write the folder name. So just see, you can see there is 123 folder. I think okay, yeah, plus sign you have to use to hide. Instead of minus sign, you have to use plus sign. So use plus sign to hide that folder, and minus sign to unhide that folder. Okay, so I will minimize this, and if I will run this commands, so you can see it is not going. Yeah, you can see it has gone, but yeah, I don't know, I will deselect this. See, it has gone with that also. Okay, अगर से मुझे वापस लाना तो माइनस साइन से मैं रन करूंगा और ये वापस आ जाएगा. यू कैन सी वहां पे एकदम बॉटम में आ गया. वापस से प्लस वाला अगर से मैं कमांड इनकेस रन कर रहा हूं तो वापस से वो अनहाइड हो जाएगा. दिखा? विजिबल है? यू कैन ऑल Yes, कैन सी. तो Yes, अगर sir. से आप यहाँ पे yes, हिडन आइटम्स पे क्लिक भी करते हो ना, तो भी वो आपको वो नहीं दिखेगा. दिख रहा है? नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको मैंने सीएमडी से ही हाइड किया है. ओके, सो सीएमडी से आपको अनहाइड करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? माइनस साइन का यूज फिर यहाँ पे करना पड़ेगा. सो देन ओनली यू कैन अनहाइड फ्रॉम हियर. ओके, सिंपल. सो अगर से आपके सिस्टम में कोई फाइल वगैरह या फिर कुछ है तो यू कैन कम टू नो वेदर इट इज विजिबल और नॉट. अगर से या फिर आप कोई malicious पेलोड या फिर कुछ और malicious फाइल बना रहे हो तो आप यू कैन यूज दिस मेथड टू हाइड दैट. ओके, कि इस तरीके से भी हाइड हो सकता है. क्लियर है? hello. Yes, sir. Yes, sir. ओके, Sir, I have a doubt. या टेल मी. Sir, if someone created a file and ओके, they hide that file through the CMD, and ओके, how can we know the file name? ओके, एग्जैक्टली. वहां पे आपको फाइल नेम कैसे पता चलेगा? तो वहां पे आपको रैंडमली आप सर्च कर सकते हो. जैसे सी द एक्सटेंशन, जो भी malicious फाइल होगी उसका एक्सटेंशन लास्ट में exe होता है. ओके, सो वहां से आप वो पता कर सकते हो. या फिर इट्स बेटर कि आप अपना डिफेंडर हमेशा ऑन रखो, सो malicious फाइल आपके सिस्टम में एंटर भी नहीं होगा. या फिर वो आपको पेन ड्राइव में भी हाइड करके भी दे सकता है. ओके, सो इट्स बेटर टू ऑलवेज ऑन योर डिफेंडर एंड फायरवॉल. ओके, और या फिर अगर से हाइड भी करके दिया, एंड इफ, जैसे मैंने इसके पहले एक मेथड बताया था जहां पे एट्रिब वाला कमांड यूज करके हमने सारी हिडन फाइल देखा था जो पूरा लोड हुआ था सिस फाइल के अंदर. सो वहां पे अगर से मुझे दिखता है जिसका एक्सटेंशन मेरा लास्ट में डॉट exe होता है. ओके, सो ऐसे टूल यू हैव टू यूज दैट जो आपको हिडन फाइल्स देगा. बट वहां पे आपका एक्सटेंशन आपको देख के पता करना पड़ेगा दैट दिस कुड बी malicious. ओके, or else you can Yes, sir. use this method to hide your file and folder which you don't want to show anyone. Okay, Yes, sir. yeah. And till now what we have learned, any doubt anyone? No, sir. डॉट एक्सी एक्सटेंशन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का होता है, तो जरूरी नहीं है हर एग्जीक्यूटेबल कोई मालवेयर हो. ऐप के भी होते हैं ना ये एक्सीज. Exactly, कोई भी हो सकता है. मोबाइल अगर से
आप एंड्रॉयड के लिए होगा तो उसका एक्सटेंशन कुछ भी और भी हो सकता है। ओके, या फिर एक्सटेंशन कुछ चेंज करके कुछ और भी हो सकता है। ओके, सो इट डजेंट मैटर कि वो जरूरी नहीं है कि वो वही होगा, इट कुड बी एनीथिंग। बट सो दैट्स व्हाई यू हैव टू यूज दैट एंटीवायरस एंड ऑल, कि वहां पे कुछ भी अगर से इनकोड करके भी उसके फाइल को सिस्टम में अगर से एंटर करने की कोशिश करेगा, सो वहां पे आपका डिफेंडर फायरवॉल फर्स्ट स्टेप आपको अलर्ट करेगा। उसके बाद अगर से आप रेगुलर बेसिस पे अपने सिस्टम की सभी फाइलों को स्कैन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ एंटीवायरस एंड ऑल, सो वहां पे वो आपको वहां पे बता के देगा कि दिस फाइल कुड हैव malicious थिंग। ओके, क्लियर है? Yes. एंड Yes. एंड आप अपने जस्ट विल कम टू नो देयर इज वन मोर थिंग दैट how you can extract the password of your connected Wi-Fi. Can anyone tell me? Do you have any method? या आप जिस वाईफाई से कनेक्टेड हो आप उसका पासवर्ड कैसे पता करोगे? सर कमांड है उसका कुछ तो। एग्जैक्टली आपको सीएमडी के लिए कमांड होता है, तो आप जस्ट सर जब भी ब्लैंड नेट शो प्रोफाइल नेम इक्वल्स टू कोट्स के अंदर वाईफाई का नेम फिर की इक्वल्स टू क्लियर। एग्जैक्टली समथिंग ऐसे ही कमांड है वो। ओके, तो जस्ट ये मेथड आप एंटर कर सकते हो, या तो नेट एसएच wlan शो, आप यही बता रहे हो क्या? हाँ सर वही बताया मैंने। ओके, तो शो प्रोफाइल, तो यहाँ पे आपको जितने भी आप नेट तो वो एसएच की शो यहाँ पे आएगा। ओके, तो यहाँ पे आप जितने भी वाईफाई से टिल नाउ यू हैव बीन कनेक्टेड, यहाँ पे आपको सारे डिवाइसेस शो कर देगा। एंड यू हैव टू यूज, जैसे आपको यहाँ पे एलोगा i7 का निकालना है। ओके, सो आप कैसे करोगे? यहाँ पे आपको नेम इक्वल टू कोलन, यहाँ पे आपको उसका पूरा नाम पेस्ट करना पड़ेगा। सो दिस इज वन वे, एंड देयर इज ऑल्सो अदर वे। यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा? की इक्वल टू क्लियर। तो यहाँ पे जो आपका की कंटेंट में होगा वो पैनासोनिक सीधा सीधा डायरेक्टली मुझे विजिबल हो जाएगा। ओके, सो ये एक वे है कि आप जो भी कनेक्टेड जितने भी वाईफाई है इनटू योर सिस्टम, यू विल कम टू नो व्हाट इज द एक्चुअल पासवर्ड जो आपने इंटर किया था कनेक्ट करने के लिए। ओके, या फिर वहां पे आप सीधा एक टूल होता है वायरलेस की भी, वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप देख सकते हो। अगर से मैं वायरलेस की व्यू पे जाऊंगा, जस्ट फर्स्ट वाले पे ही आपको जाना है। यहाँ से आपको जस्ट ये टूल डाउनलोड करना है। ओके, एंड जैसे कि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है इसको, तो यहाँ पे मैंने इसकी जिप फाइल ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी है। इसको आप एक्सट्रैक्ट करोगे, तो जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्सट्रैक्ट करके भी रखा है। यहाँ पे ये वायरलेस की आपको मिलेगा। ओके, और इसका ये शायद नोट पैड है जो कि किसी काम का नहीं। यहाँ पे आपको वायरलेस एक की व्यू है, जस्ट यू हैव टू रन दिस, और यहाँ पे आपको जितने भी वाईफाई से आप कनेक्टेड होगे टिल नाउ उसके सारे पासवर्ड आपको ये दे देगा। ओके, सो यू डोंट हैव टू यूज एनी काइंड ऑफ कमांड एंड ऑल, और आपको कोई नाम डालने की भी जरूरत नहीं है। इट विल गिव यू ऑल द वाईफाई पासवर्ड विच यू हैव कनेक्टेड टिल yet। ओके, or guys, there is also many websites which detect any kind of viruses into the system. See, if there is a one very famous website, virus total का नाम सुना है किसी ने? यस सर। Yeah, तो virus total is very famous among virus detection and all. This is virus total website. We'll go to, and यहाँ पे आप
पूरी फाइल को ही एक्सेस करा सकते हो। यहाँ पे आप पूरी फाइल को ही लोड करा सकते हो कि जैसे मैंने फाइल यहाँ पे लोड करा दिया, सो इट विल gone through each and every folder of this line, see like paper one, p1, यहाँ पे मैं लोड कर दूंगा, या फिर यहाँ पे टेक्स्ट फाइल भी डाल देता हूँ। चलो कुछ तो यहाँ पे ले नहीं रहा, बट यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पूरे फोल्डर डाल सकते हैं, या फिर यहाँ पे मैं कोई यूआरएल डाल सकता हूँ, और यहाँ पे कोई सर्च के लिए भी डोमेन नेम वगैरह डाल सकता हूँ। सो अगर से आपको कुछ आता है कि जैसे कोई जीमेल आया, वहाँ पे कोई लिंक हुई, सो अगर से आप लिंक डालते हो यहाँ पे, so it can show you whether it could be malicious or not. ओके, जैसे यहाँ पे सर्चेस के लिए एक हम लोग HTTP की कोई वेबसाइट एक उठा लेते, देखते वो बता पाता है क्या। इन URL यहाँ पे कोई वेबसाइट है, देखते हैं कि ये बताता है कुछ क्या। वो सारी वेबसाइट की जितनी भी फाइल्स होगी बैकग्राउंड में सबको एनालाइज करेगा, एंड इट विल show us whether this could be malicious or not, whether you have to spend your time on this kind of website or not. सो अभी हमको पता है कि HTTP और HTTPS जो होता है, ये वेबसाइट एकदम क्लीन है, इसके अंदर कुछ है नहीं। ओके, यहाँ पे अगर से कुछ होता भी तो यहाँ पे मुझे बता देता था। और एनी अदर वेबसाइट वी कैन टेक, अगर से वो होगा जितने परसेंटेज या फिर जो भी है, वहाँ पे आपको रेड रेड दिखा देगा। ओके, तो दिस वायरस टोटल यू कैन यूज, और this was the hide, how you can hide the files, and so this is the website, and let's see any other website which we can see virus. Okay, so there are many paid tools also. Okay, जो भी files को detect करती है। Okay, so paid tools भी available होते हैं और free भी होते हैं। So let's see. Okay, so this is software. ओके, ऑनलाइन सिक्योर, ये जो भी सिस्टम्स की फाइल्स होंगी उसको ये डिटेक्ट करेगा। दिस इज वन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, नॉट इंटरेस्टेड इन सॉफ्टवेयर, नॉट विल रिमूव दैट सॉफ्टवेयर। Okay guys, so there is one more tips and trick which we'll learn in how we can set window password without knowing the old password. Okay, so मेरे वर्चुअल मशीन में विंडो ऑलरेडी रनिंग होगा। सो विंडो का पासवर्ड मैं कैसे चेंज कर सकता हूँ, किसी को पता है कि पासवर्ड कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं? तो सी, यहाँ पे अगर से मैं गया, कंट्रोल यहाँ पैनल। कंट्रोल पैनल में एग्जैक्टली, या फिर चेंज अकाउंट सेटिंग में भी जा सकते हैं। यहाँ पे साइन इन ऑप्शन पे इफ यू गो, तो यहाँ पे आपको चेंज पासवर्ड पे जब आप क्लिक करोगे, इफ यू क्लिक ऑन चेंज अकाउंट पासवर्ड, सो आपको करंट पासवर्ड मांगेगा। इफ यू डोंट नो द करंट पासवर्ड, या फिर आपको आपके सिस्टम का किसी सिस्टम विंडो सिस्टम का एक्सेस मिल गया, ओके, तो आपको पासवर्ड उसका रीसेट करना है, but you don't know what is the current passwords and how we will reset that password. Okay, या फिर आपको आपके फ्रेंड का लैपटॉप ओपन मिल गया और आपको एग्जैक्टली करंट पासवर्ड नहीं पता, इवन दो यू हैव टू रीसेट द पासवर्ड किए, आपके बाद वो सिस्टम को एक्सेस ना कर पाए कोई और, सो आपको यू हैव टू चेंज द पासवर्ड विदाउट नोइंग द करंट पासवर्ड। सो हियर अगर से आपको करंट पासवर्ड पता है तो आप यहाँ पे कर सकते हो बेसिकली। सो करंट पासवर्ड मैंने क्या रखा था इसका, रूट रखा था आई थिंक, या कुछ हेलो और था, ठीक क्या?
चेंज किया था शायद हेलो हेलो। हाँ हेलो एग्जैक्टली, ए बट या गुड गुड सी हम रियली भूल गए थे कि वी फॉरगेट दैट करंट पासवर्ड इफ यू रियली डोंट नो, बट मेरा सिस्टम तो मेरे को ऑन है पता है, तो भी मैं कैसे इसको रीसेट कर सकता हूँ वो देखते हैं। करंट पासवर्ड तो मान लो इनकेस मुझे नहीं पता। ओके, सो विल कैंसल दिस एंड will open cmd run as administrator. This is cmd, we have to run as administrator, and what you have to do over here, you have to write over here net user. So it will show you different kinds of user into your system. So मेरे सिस्टम में यूजर कौन कौन से हैं? एक ये यूजर है जो इसका यूजर है 9197 और एक एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह डिफॉल्ट ये सब है। सो मुझे ये जो यूजर है मेरा करंट यूजर कौन सा है 91970। ओके, सो मुझे इसका पासवर्ड चेंज करना। सो व्हाट आई विल डू ओवर हियर, आई विल टाइप नेट यूजर एंड यू हैव टू टाइप द यूजर नेम। सो मेरा यूजर नेम क्या है 91970 एंड देन द पासवर्ड जो आपको वापस से रखना नया पासवर्ड। सो नया पासवर्ड मैं रख देता हूँ रूट। ओके, सी मैंने रूट पासवर्ड रखा है। पासवर्ड हैज बीन चेंज कंप्लीटली सक्सेसफुली। लेट्स चेक कि हुआ या फिर नहीं हुआ। तो लॉक करते हैं मशीन को। यहाँ पे पहले का पासवर्ड था मेरा हेलो, पहले के पासवर्ड से नहीं खुल रहा है। नया पासवर्ड क्या है अपना रूट। लेट्स सी, मैंने देखो यहाँ पे रूट डाला। ओके, अब देखते हैं, देखो रूट से खुल गया। ओके, सो अगर से आपके किसी भी फ्रेंड का लैपटॉप आपको मिलता है, नया पासवर्ड नहीं पता, सीधा पासवर्ड चेंज कर दो। जोक्स अपार्ट, ऐसा नहीं करना अगर से, बट ये टिप्स एंड ट्रिक्स आप यूज कर सकते हो इनटू हैकिंग इफ यू गॉट एनी सिस्टम रिमोट एक्सेस और एनीथिंग, सो यू कैन, या फिर आपको सीएमडी का एक्सेस मिल गया, सो यू कैन यूज दिस मेथड टू रीसेट द पासवर्ड विदाउट नोइंग द एग्जैक्टली करंट पासवर्ड। ओके, ये क्लियर है? ओके यस Yes, sir. आई थिंक सीएमडी में वाईफाई पासवर्ड हाउ वी हैव टू सी, मैंने बताया नेट एसएसडब्ल्यू शो प्रोफाइल। Kali password, how we have to break, can use this method to break the Kali password, and how to hide any files, this also I told you. Okay, and how to detect virus using CMD, this also I told you how you can detect. Okay, and then we'll learn what is batch file. Okay, so as you know, this is my window machine. I will click on Akash. So as you all can see, there is a lot of window opening into my system. See, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने बैच फाइल को जस्ट ओपन किया, मैं इसको कंट्रोल सी से बंद कर, कंट्रोल एक्स से या कंट्रोल सी से बंद के रोक दिया और स्टॉप करूंगा। ओके, और इसको नो कर यस कर दूंगा कि मुझे इसको रोकना है, और यहाँ पे मैं सारी फाइल जितने भी सिस्टम में लोड हुई है सबको डिलीट कर दूंगा, या फिर यहाँ पे जितने भी फोल्डर हुए हैं मुझे इनको क्लोज करना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत सारी फाइल्स बनेगी। ये सारी फाइल्स क्या होगी, जब भी बनेगी सिस्टम को पूरा ये डाउन कर देगा, इतने सारी फाइल्स पूरी स्टोरेज ले लेगा, पूरा रैम ले लेगा और पूरा सिस्टम को डाउन कर देगा। सो दिस वाज द बैड फाइल, you have to go to edit mode and you can use this. See, there is Akash start. So explorer exe जब भी आप ओपन करोगे cmd में, will open cmd, we'll see what is this actually. See, as soon as you put enter over here explorer.exe,
you can see this file manager over here. Okay, and when you open Akash, start Akash command, start Akash. So or start notepad and all. तो यहाँ पे आपको नोटपैड दिखता है, दिख रहा है? तो अगर से आप नोटपैड डालोगे या फिर कुछ और डालोगे, स्टार्ट नोटपैड डाला आपने या फिर स्टार्ट कुछ और डाला, सो वो सारी चीजें यहाँ पे चालू हो जाएगी। बट यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं कि यहाँ पे हम लोग बाइट फाइल बनाते हैं कि आपको स्टार्ट वो फाइल का नाम डालना है जिस नाम से आपको ये फाइल सेव करनी है। जैसे मैंने ये नाम यहाँ से चेंज कर दिया, यहाँ पे कुछ और डाल दिया। ओके, जैसे कुछ और मैंने 1 2 3 4 डाल दिया। ओके, अब मैंने इसको सेव किया। इसको मैं सेव किया। ओके, नाउ मुझे इसको रीनेम करना पड़ेगा 1 2 3 4 से। सो दिस इज कॉल्ड एज बैट फाइल। यहाँ पे आपको स्टार्ट भी से उसी फाइल को करना होता है जिससे आप वो नेम रीनेम करते हो। ओके, तो ये जब भी आप ये ओपन करोगे सी, तो ये अगेन यू हैव टू प्रेस कंट्रोल सी ऑप्शन टू स्टॉप दैट। देखा गाइस, तो ये होता है बैट फाइल। अगर से आप ये छोड़ भी दोगे तो इतनी सारी फाइल्स बनेगी, पूरा रैम ये ले लेगा और it will full your RAM or your storage device, so and ultimately your system will crash. Okay, अगर से आप like this you open this, and how furthermore we can create, we'll see over here. See, there is a further more example of bat files, so we'll create over here further more bat file into notepad. So just open notepad, and this is one kind of, you can say, virus and all, anything you can say, or bat file also you can say, which ultimately this will do, this will uh, infect your system, and goal of this is to crash your system, okay, or slow down your system to fulfill all the RAM. Okay, so this you can say one kind of virus only, and in notepad आपको just ये enter करना होता है। यहाँ पे आपको different kinds of bat files के कोड दिख जाएंगे। so ये लिखा आपने और आपको इसको सेव करना है, कंट्रोल एस, और आपको इसको सेव करना है डेस्कटॉप पे ही। आई विल सेव ऑन डेस्कटॉप ओनली। इसका एक्स नाम कुछ भी दो, एनीथिंग द नेम यू कैन गिव, बट द एक्सटेंशन शुड बी बैट। सो लाइक आई विल गिव द नेम ऑफ hack act dot bat। ओके, तो यहाँ पे आपको दिखेगा hack dot bat। ओके, सो आपको क्या है, जस्ट यू हैव टू क्लिक, डबल क्लिक ऑन दिस, and you will see over here matrix like hacking begin. Okay, all can see hacking begin, and different kinds of a lot of basic numbers you can see। and यहाँ पे आपको अगर से नाम प्रीव्यू कराना है तो वो सब भी आप करा सकते हो। how you can do, like see, I have to, if you will put enter button or any other, it will stop। see, it has been stopped, and now press enter button, it will again start। okay, see, एंड ना अगर से मुझे यहाँ पे आपका या किसी का नाम डालना है, सो चलो किसी का नाम बताओ। कोई अपना नाम बताना चाहेगा? पुष्कर। हैक, पुष्कर हैक्ड। ओके, हैज बीन हैक्ड वगैरह भी डाल सकते हैं हम लोग।
इसको just you have to save and you have to just run. So when you will start running this file, so you can see over here pushkar has been hacked and उसके आगे आपको बहुत सारे numbers दिखेंगे. Okay, so this is one kind of bad file and if you will press that keyboard mouse button, so it will stop. और अगर से आप वापस से start enter करोगे तो वापस से start हो जाएगा. ओके, सो ऐसे मल्टीपल बैट फाइल्स आप बना सकते हो. ओके, जो आपके सिस्टम के लिए अगर से आप यूजफुल वाला बना भी सकते हो या फिर आप मेलिशियस वाला भी बना सकते हो उसके लिए. ओके, सो इसके कंटेंट को मैं इस तरह से यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकता हूँ. एडिट, गो टू एडिट मोड, विल डिलीट दिस एंड देखते हैं इससे क्या होगा. कंटिन्यूअसली रिपीट मैसेज, यहाँ पे आपको मल्टीपल मैसेजेस रिपीट करके देगा. ओके, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल मैसेजेस दे रहा है. इसके अंदर आपको स्टॉप करने के लिए जस्ट क्लिक करना है एंड अगेन एसएमएस करोगे, आपको मल्टीपल दिख जाएगा यहाँ पे मैसेजेस. ओके, एंड यहाँ पे ओपन नोटपैड कंटिन्यूअसली, अगर से वो जो लास्ट इसके पहले वाले में देखा था वहां पे आपको अगर से नोटपैड कंटिन्यूअसली ओपन कराना है तो यहाँ से आप जस्ट यहाँ पे जा सकते हो. लेट्स सी हाउ इट विल वर्क. यहाँ पे आपको नोटपैड से यहाँ पे हो रहा ओपन की सिस्टम दिख भी नहीं रहा, इतना फास्ट हो रहा है. ओके, यहाँ पे मल्टीपल बहुत सारे ओपन हो रहे. देखो यहाँ पे जस्ट कि सिस्टम भी हैंग करने लगा जस्ट जैसे मैंने रन किया इसको. देख रहे हो, यू कैन सी. तो यहाँ पे मैं जस्ट को कंट्रोल से करूंगा. तो लाइक दिस यू कैन क्रिएट योर ओन बैट फाइल ऑल्सो. इसको बैच फाइल बोलते हैं. ओके, सो बैच फाइल यू कैन आप ये मेलिशियस वाले भी बना सकते हो विच इंटेंशन, यहाँ पे आप कुछ और इंटेंशन से भी बना सकते हो. ओके, बट सिस्टम के लिए यूजफुल बैट फाइल्स भी आप बना सकते हो. ओके, क्लियर है गाइस. एक्सटेंशन क्या होना चाहिए बैट फाइल का? Yes, sir. एक्सटेंशन डॉट बैट होना चाहिए हमेशा उसका. ओके, अभी देखो इतना ज्यादा हो रहा है कि मैं यहाँ से इसको बंद भी नहीं कर पा रहा हूँ, इतना ज्यादा नोटपैड खुल रही है. ओके, तो अल्टीमेटली सारे नोटपैड खुल जाएंगे, रैम पूरा फुल हो जाएगा जितना मैंने इसको दिया है और ये मशीन पूरा डाउन हो जाएगी. तो इसको मैं अभी रिस्टार्ट करता हूँ. देखते हैं रिस्टार्ट करके उसके बाद कुछ और एग्जांपल देखेंगे बैट फाइल्स के. ओपन सीएमडी कंटिन्यूअसली, सो अगर से आप ये यूज करते हो तो यहाँ पे सीएमडी बहुत ज्यादा बार कंटिन्यूअस मैनर में दिख जाता है. ओके, इवन के रिस्टार्ट भी नहीं हो पा, देख पा रहे हो. Okay. तो उसका मशीन अभी अगर से आपने बना के किसी के सिस्टम में रन भी कर दिया ना तो देख पा रहे हो कितना इसका बुरा हाल हो गया कि जस्ट लोड हो ही रहा है तब से ये. तो यहाँ पे आप मल्टीपल्स यूज करके भी कर सकते हो. यहाँ पे एक बहुत अच्छी वेबसाइट एक और है which I found very useful, cyber dictionary. So on this also you can create many batch file on. See, this is see here you can go block Google. So अगर से आप if you are running this command into your batch file and these are the commands, so it will not able to use Google and all, and you can change the time and
detect my picture and document. So it will delete all the pictures on music memory. Like this, if you want to clean the my document folder, so you can run this bat file. It will clean all the documents. You don't have to go to and delete the each and every option through your system only, through yourself. Just run this bat file and it will do clean for yourself. Okay. So like this, I told you, you can create useful bat files also. Okay, here you can see swipe mouse button. You can swipe your mouse button also, disable mouse, and there are many other things which you all can do. Here you can see PC security. You can increase with this bad files, and there is some other thing. Okay, hello. Yes, Yes. sir. Yes, sir. So I will power off this window machine, and I'll have just Kali machine. Okay, so अभी पहले प्रीवियस सेशन में and अभी के सेशन में वी कैन कीप दिस 10 मिनट क्वेश्चन आंसर सेशन. ओके, कि पहले के सेशन में अगर से आपको कुछ डाउट है या फिर आज के सेशन में कुछ डाउट है, सो वी कैन डिस्कस दैट. ओके, और यू कैन हैव एनी टॉपिक, सो वी विल हैव डिस्कशन ऑन दैट. So this was the side, and this is also one PPT, which is what is the actually virus and what is adware. जो already I told you with that. And spyware, worms. Worms क्या करते हैं? Just they multiply yourself to slow down the systems. Okay, trojans वहाँ पे ransomware. Okay, so this PPT also I will share to you all, so you don't have to just uh, you have to just read these things and you'll come to know what the actual different kinds of malware are there into the cybersecurity. Okay, and you can use these two websites to create batch files. Okay, guys. And any other Yes. commands and all which you want me to tell. Like this is my Kali machine. What password मैंने क्या इसका good रखा था, I think. Yes. Okay, so previous session का या फिर आज के सेशन का कोई डाउट है? ऑलरेडी सबने अपनी अपनी मशीन के अंदर काली मशीन इंस्टॉल कर लिया. इंस्टॉलेशन से Yes. रिलेटेड डज एनीबॉडी हैव एनी डाउट? No. Okay, then great. So commands related, does anybody have any doubt of Kali? Okay, I will tell you where the path, यहाँ पे एक path होता है cat etc password जहाँ पे where you can find all the users. See, I have created one Pushkar user is there and the Kali user is also there. Okay, every user which I will create, I can find that user over here cat etc password, and I can open this file into vim command also. Uh, See, here you will see that colorful structure. Okay, output into colorful mode. See, सर विंडो मैक्सिमाइज करो ना. bus, bus. Now is it visible? Okay, so मैंने अभी क्या विम में एंटर किया था, तो आगे आप इसमें से बिना सेव किए बाहर आ जाओ. और यहाँ पे आपको इन केस ये फाइल के अंदर आपको कुछ सर्च करना है, तो यहाँ पे एक कमांड होता है हमारे पास grep का. ओके, यू कैन यूज grep कमांड. सो इन केस मुझे पुश कर सर्च करना है. ओके, सो यू कैन यहाँ पे पुष्कर वाली लाइन आपको दिख जाएगी, या फिर आपको कुछ और वर्ड सर्च करना है इसके अंदर, रूट सर्च करना है, तो वहां पे आपको रूट जो वर्ड में जो लाइन में होगा
आपको रूट वर्ड वहां से यू कैन सी दैट रूट वर्ड। ओके, और इफ यू वांट दैट कि आपको जस्ट बिलो से लास्ट 3 और 4 लाइन आपको चाहिए, so how you can do, you can use tail command over here, tail hyphen 3. So just you will able to see just last 3 lines of that all big page. You will just able to see just last 3 line. Okay, or you just want to see uh last 5 line from top. So how you can see here, you can use head command, head hyphen, you can see 3 beginning line or 5 beginning lines. So like this you can see. Okay, so head and tail command clear to you all. Head command is used to see a few lines from above, and tail command is used to see a few lines from below. And the grep command which I told you is to find the different kinds of things into any kind of particular text file. Okay, and how to create a script and how to execute different kinds of script, that thing I told you. That is it, that is clear, or you have doubt in that? किसी ने जस्ट ओपन करके इसको चलाया कालीनेस को? यहाँ पे अच्छा इसके मैं फाइल सिस्टम बता देता हूँ। जस्ट आप फॉरवर्ड स्लैश पे जाओगे, यहाँ पे आपको मल्टीपल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनबिल्ट सिस्टम्स की फाइल दिखेगी। ओके, सो यहाँ पे जितने भी यूजर्स होते हैं उसकी सारी डायरेक्टरी, ये होम डायरेक्टरी फॉर ऑल द यूजर्स। ओके, यहाँ पे जितने भी यूजर्स होते हैं, इफ यू गो टू होम डायरेक्टरी, हियर यू विल सी different kinds of user like Kali and the Pushkar. Okay, if I want to remove this Pushkar user, so how you can remove? So user del command. Remember I told you user Yes. means you are deleting that user. Okay, user del Pushkar. Okay, now अगर से अभी भी देखोगे यहाँ पे दिख रहा है, बट अगर से आप if you go to see first WD, यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है। ओके, यहाँ पे आपको जस्ट दिखेगा कुछ टाइम के लिए, उसके बाद वो भी नहीं दिखेगा। बट अगर से आप उसके पासवर्ड की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाओगे, सो वहां पे भी आपको नहीं दिखेगा। एग्जैक्टली exactly. यहाँ पे आप यू कैन यू ऑल्सो क्रिएट ग्रुप ऑल्सो। ओके, आपको ये पता है कि हम लोग काली लिनक्स के अंदर हिडन फाइल्स कैसे बनाते हैं? हाउ वी कैन क्रिएट हिडन फाइल्स ओवर हियर? No, sir. Okay, Yes. I will have discussion on that. See, if I will go to desktop, see on desktop, if I will create that text file 123 नेम से, तो यहाँ पे मैंने डायरेक्टरी बनाया, कहाँ पे? डेस्कटॉप पे। सो जस्ट आप एलएस करोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा। ओके, बट अगर से या फिर आप मल्टीपल, मैं एक काम करता हूँ, यहीं पे काम करता हूँ। यहाँ पे आप जब बनाओगे, यहाँ पे mkdir 123 करोगे तो यहाँ पे आपको वो चीज दिख जाएगा। ओके, और अगर से आप इसको हिडन बनाना चाहते हो तो कैसे बनाओगे? ये तो अभी सामने दिख रहा है, तो हिडन बनाने के लिए आपको वहां पे mkdir डॉट, अगर से किसी एक का नाम बताओ तो हिडन डायरेक्टरी उसके नाम से बनाएंगे हम लोग। किसी एक का नाम बता सकते हो? Abhishek. Asadullah. अभिषेक, Yes, sir. असद, अभिषेक। ओके, सो यहाँ पे जो देखो, यहाँ पे अभिषेक नाम का डायरेक्टरी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही, बट आई हैव क्रिएटेड दैट अभिषेक डायरेक्टरी। सो फॉर टू सी दैट यू हैव टू यूज ls-a command. Now you will able to see that Abhishek. Can you see? Yes. Yes, sir. Yeah, so that is hidden. So to see hidden files, you have to use that option -a.
Okay, to see hidden files, you can also create. And if you will try to remove, see here you cannot see. If you will try to remove that hidden files, you will not able to even remove that, because that will show no such file in directory. So to remove hidden files, can anyone tell me how can I remove? Here you have to use dot because it is hidden. So now you can see that it has been removed. See, there is no hidden and no Abhishek file. Okay. So like this, you can remove hidden and unhidden files. Okay. And like this, you can also create text file also. See, like if you are creating touch file 1.txt. Okay, see here there is file 1.txt, but I want to save any kind of confidential data. So how you will create? So you will have to create confidential data, and you have to start with a dot. So it will be created as hidden file. See, there is no confidential. So how you will see that confidential file? Can anyone tell me? ls hyphen a. So you will able to see that confidential file. Can you able to see on the second column last confidential? Okay. And if you want to remove that rm hyphen rvf, you will not able to see, but you have to use dot sign to remove that confidential. Done. Yeah, spelling mistake. Okay, and if you will go to see that hidden file, you will not able to see. Okay, so like this, you can create hidden files or directories into Kali Linux machine. Okay, guys, do you have any doubt regarding any command of Kali Linux? No. Okay, great. And do practice. Can use clear command to clear all the screen. And I told you how you can change the password of all the user. That passwd command you can use. Okay. And if you want to see, if you want to write anything into this, how you can write? You can open nano editor and you can write over here. I1, I2, I3. You have to just save this file. And how can read cat file.txt? You can read like this. You can use hyphen n option over here to see number of lines over here. Okay, so like this you can see. Okay, so do you have any doubt till yet? No. Okay, it's great, and we'll see you guys in the next lecture. And till meanwhile, you just download all that uh, resources which we need for further lectures, like Kali Linux environment. And if you want to practice like how you can crack the window password, you can download window ISO also to crack window password. Okay, and just install Kali Linux and try to that break username and password while login. Okay, so you can have practice over that also. Okay, and be ready with your system. We'll have a further topics on that. Okay, so I will start